Hello everyone, welcome back. I hope you people are doing well. See, in the last video we have already discussed regarding the properties of addition and subtraction of the integers and so on, and its various properties. In this video we will learn about multiplication of integers and its properties. So let's get started. Okay, before starting multiplication of integers, can you tell me what multiplication is actually? See, multiplication is the repeated addition of any number. It is the repeated addition. For example, if we take any number, say 3, 4, let me simplify first of all, then I'll take some other number. Let us take 3, 3, 3, 3. Okay. So I want to add this number. So what I will do here, I will add this way. How many 3? 4 threes. So what is the result? 12. Now, if I want to simplify it, what I can say, this 3 is repeated how many times? 3 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4 means it is repeated 4 times. And if we multiply this, we get the same result. But you see, here we are having only 4 numbers, but you may get many more numbers to add, right? So that will be a very tiresome job. So just to simplify our job, it's helpful if we use the multiplication here. Okay. So before starting the various properties, before telling you the various property, let me tell you the rule of sign of integers. Rule of sign. While calculating the different calculations. Okay. See, in the previous class, I think I have not taught you. Wait. See, if we have plus and plus, then in the result we will have plus. If we have minus and plus, then the result will be minus. And if we have plus and minus, then again the result will be minus. And if we have minus and minus, then the result will be plus. Now see, for addition and subtraction how the rule for what is the rule we follow here is that if we have any two numbers and if we add them, then whatever the sign is before the greater number, whatever the sign before the greater number will be the sign of the end result. Okay, say for example, if we have 4 minus 2, what is the result? 4 minus 2 is 2. And what if we do not have any sign, that means it is a positive number, right? So what is the sign before the greater number? Here 4 is greater, and what is the sign before it? It's plus. So here it is plus. So for plus you don't need to write it. And for example, take some other example like minus 5 plus 3. You have this. Okay, then what happens here? Whenever we have this kind of number, then one is minus and other is plus. That means definitely we need to do the subtraction here. So 5 minus 3 is what? 2. And what is the sign before the greater number? It is minus. So in the answer, the end result will have a negative sign. Okay. But if we have both the numbers as negative, then what we will do? In this case, we will add the numbers. If both the numbers are having negative sign before them, then we will add the numbers. 4 plus 2 is what? 6. And we will put the sign negative there in the end result. Got it? So just keep in mind that while doing addition and subtraction, if we have a positive number and a negative number, and whichever number is greater and whatever the sign before it, then we will put that sign in the end result. But if both the numbers are negative, then in that case we will add the numbers and
put the negative sign here. Again, if we have, for example, you may take one more example here, like -2 -5. Then again what you will do, you will add the numbers. 5 plus 2 is 7, and we will just put the negative sign here. So this is the case for, you just keep in mind, this is the case for addition and subtraction. Okay, now this is the rule of sign. This is for multiplication and division. Okay, we will follow this rule for multiplication and division. So whenever we have any number with positive and sign, and if both the numbers which we are operating there, if both the numbers have the positive sign, then the result will be positive. If one is negative and other is positive, then we'll have negative result. And again, positive, negative, 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 positive result. Okay, so let us understand it by taking some example. Suppose we have we need to multiply 4 and 6. Here you can see both these numbers are positive. So 4 into 6, what we will get here? 24, and the result will be positive. Again, second one, if we take for example, one number is negative, -2, and the other number is positive, into any number 3. 2 -2 into 3, what is it? 2 3s are, we will multiply the numbers, whatever the whole numbers is there, means that this whole number is 3 into 2 is 6. Okay, and if we multiply the sign, here it is minus, here it is plus, then minus plus is minus. So here the result will be minus. See very carefully. There will be this will be the different case for addition and subtraction. For multiplication, we will have the different case. Okay, we will follow this rule for multiplication. Okay, and let us take one more example. Here in the first case we have a positive number. Let's say we take 5, and in the second case we multiply with a negative number, any number, say 3, -3. See, whenever you write like this, if there is into and plus or minus, and you just put a bracket there, you can't write it without bracket. Okay, so what it is, 5 3 is a 15, and plus minus sign is plus, minus sign is minus. So you will put the sign here minus. Again, the third case is we are having both the numbers as negative. So -2 into -4. I'm just taking any random variable. Okay. So what will be the result here? 4 2 is 8, and minus minus is plus. So you can see here, just see the difference very carefully. Whenever we are doing multiplication, the sign whatever we get in the end result, we will follow this rule. But in case of addition and subtraction, we will follow what? The rule that whichever number has is greater, we will put the sign of that number. Okay, and if both the numbers are negative, then we will just add the numbers and put a negative sign there. I think up to here it is clear to you. And if any doubt you have regarding this till now, whatever I have taught here, you comment in the, just comment below. I'll try to clear your doubts. Okay, you can see here multiplication of integers. This is the rule of sign for multiplication, division, and this is for addition and subtraction. Okay, you can pause the video and look it carefully what it is actually. Okay. Okay, next you see here we have seen the multiplication of two numbers. What if there are more than two numbers? Like for example, if we have 4 -2 -3 -5, then 6. If we have this many numbers, then how will you decide the number? How will you decide what will be the sign of the end result? Say 4 into -2 into -3 into -5 into 6. We have this. Okay, it's a very 1 2 3 4 5 numbers we have here. So you see, if this is the very simple rule. First of all, whatever the whole numbers are, you just multiply this. 4 2 is 8 here. 8 3 ja, what we get here is 5 3 is what is the result? You see 5 3 15 15 30 30.
For 122, it is 720. Okay. Now you see here before 4 we have how many numbers? Here we have the positive sign. Here 2 numbers. And how many numbers we have negative sign? 3 numbers. So you just keep in mind very simple rule here that if number of negative integer is even, if number of negative integer is even, then the result, the sign of the result is what? अगर even है तो उसका जो result होगा क्या होगा? Positive. लेकिन if the number of negative integer is odd, यानी कि odd number of negative integer है, then the sign of the end result is what? Negative. Let us see how. ये पॉजिटिव है तो ये तो प्लस ही रहेगा. ओके, देन माइनस माइनस इट इज प्लस, अगेन प्लस माइनस व्हाट इज इट? द साइन विल बी माइनस. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ कितने नंबर्स है? यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स है जो नेगेटिव है. तो हमने क्या देखा? थ्री नंबर्स आर हियर 3 नंबर्स आर नेगेटिव. सो हमने क्या देखा कि 3 इज एन ऑड नंबर. दैट मीन्स द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड. अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने नंबर है यहाँ पे? 1 2 3 3 नंबर्स जो है वो नेगेटिव है. तो अगर 3 नंबर्स है यानी 3 ऑड है. अगर ऑड होता है तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. सी सिंपली यू कैन पुट लाइक दिस. तो आपको यहाँ पे अगर आप ये ध्यान रखते हो तो फिर आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि मतलब लाइक इस तरह से कैलकुलेशन में मिस्टेक कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप जस्ट काउंट कर लो कि हाउ मेनी नंबर्स आर नेगेटिव एंड जस्ट पुट द साइन देयर. अगर इवन है तो पॉजिटिव एंड रिजल्ट होगा, और अगर ऑड है नेगेटिव नंबर्स तो द रिजल्ट विल बी नेगेटिव. Just pause the video and see it carefully for some time. Okay, I hope it is clear up till now. We'll move to the next part, is properties of the multiplication of integers. So let's get started. Try to solve this. Properties. The first property we'll see here. The closure property under multiplication. Closure under multiplication means what? If we multiply any two integers, अगर हम किसी दो integers को multiply कर रहे हैं, maybe any integer, suppose 4 into 2, 4 into both of these are integer, what is the result? 8. If we multiply, we are getting an integer. If we take any other integer, say minus 5 into 4, what is it? 5 4 जो 20, minus 20, right? minus 20 कैसे आया? समझ में आया ना? We are applying that rule, multiplication rule. माइनस प्लस माइनस एंड 5 4 20. ठीक है, तो हमें फिर से यहाँ पे इंटीजर ही मिला. दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, देन सेकेंड कम्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लेट अस सी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं. ओके, सो फॉर एनी इंटीजर, हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 into 3. ठीक है, 4 into 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 12. एंड इफ आई replace the position here, 3 into 4, इसका भी रिजल्ट क्या आता है? 12 only. If I take any negative integer, say minus 2 into 5, what is it? It's minus 10. And again if I write 5 into minus 2, again I am getting the same result. That means what? Here if I multiply a into b, this is equal to b into a. That means it is satisfying the commutative property. Okay, next one is, what will be the result if we multiply an integer by 0? अगर हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो what will be the result? Let us see. We multiply 4 into 0. I am taking any integer, then the end result will be 0. आप किसी भी इंटीजर, या if I multiply minus 5 into 0, again I am getting 0.
0 इंटू 0 0 सी। तो हम किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन द एंड रिजल्ट विल बी 0. ओके, नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है ये, कि आप अगर किसी भी इंटीजर को, ओके बिफोर telling you this, tell me in the comment box कि what is the additive identity. additive identity क्या है बताइए, डू कमेंट इन द बॉक्स. एंड अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से तो हमें उसका रिजल्ट चेंज नहीं होना है. ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई 4 into 1 we get 4, minus 5 into 1 we get minus 5. Here what we can see that the identity of the number is not changing. Even if we multiply with this number, this 1, the identity is not changing, it is same result, we will get the same result. Okay, again if you take any number minus 2 into 1, then again you will get minus 2 itself. So it is not changing the identity of the number. So the multiplicative identity is 1 here. Okay, that means for any Try to integer, if solve you this. multiply any integer a with 1, we will get the end result is a, or if you multiply it 1 into a. Okay, so 1 is the multiplicative identity. Okay, 1 is the multiplicative identity. I hope up to here it's clear to you. One more thing I want to add here is that we get the additive inverse of any integer a if we multiply it with minus 1. See, हम अगर किसी भी नंबर को, जैसे कि सपोज 6 है और हमें इसका एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो अगर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाएगा. अब एडिटिव इन्वर्स क्या है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास, गो एंड चेक इट आउट. सो इससे हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि सपोज कि अगर हाँ सपोज अगर हम यहाँ नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, सपोज -2, अगर हम इसे -1 से इंटू करते हैं तो ये क्या आता है 2. सो हियर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2 इज 2. तो आप एडिटिव इन्वर्स क्या है एक बार अगर आप भूल गए हो तो गो एंड चेक इट आउट. सो फॉर एनी इंटीजर a if we multiply it with -1 then we will get the additive inverse of that number. Okay, clear? Next comes associative property. Here let us take any random integer like 4, 3, 5. हमने ये 3 integers लिए and we group them in this way. First, in the first case we will group 4 and 3 together, we will get the result like this 60. Again in the second case we will group these two numbers together and again we will get the same results. So what we find from this is that is 4 into 3 into 5, if where these two numbers are grouped together, is equal to 4 into 3 into 5 where 3 and 5 are grouped together, which is equals to 60. So from this what we can infer is that for any integer a into b into c where a and b are grouped together is equal to a into b into c where b and c are grouped together. This means what? Ki if even if the position of the integers are changed, the value of the end result does not change. Okay, in case of associative property. So it satisfies the associative property here. Next comes distributive property. सॉल्व करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट 20 मिलता है. दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विच वी विल यूज इन इंटीजर्स. यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, आप यहाँ आप नेगेटिव इंटीजर्स भी लेकर के चेक कर सकते हैं. लेट्स सी, ये दिस इज फॉर एडिशन. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे एडिशन के लिए किया, यहाँ पे ये एडिशन है, ये दिस इज फॉर एडिशन. नाउ लेट अस चेक. तो हम यहाँ पे क्या इन्फर कर सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर a प्लस a into b plus c, this is equal to a into b plus a into c. Okay,
Now this one, this distributive property, it satisfies for addition. Now let us check whether it satisfies for subtraction or not. So let us take any three numbers. कोई तीन नंबर हम लेते हैं, जैसे कि any integer 4 into 5 minus 3. ओके, अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो क्या आता है, 4 into 5 minus 4 into 3. ठीक है, let us check. 4 into 5 minus 3 is what, 2. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अब हम इसे चेक करते हैं. ठीक है, 4 into 2 is 8 एंड यहाँ पे हम दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 4 जो 20 माइनस 4 3 12, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8. दिस मीन्स व्हाट, 4 into 5 minus 3 is equal to 4 into 5 minus 4 into 3. This is equal, this means what, for subtraction also distributive property is satisfied. That means for any integer a into b minus c, for any integer a into b minus c is equal to a into b minus a into c. ठीक है, a into b माइनस माइनस a into c. ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई होता है. ओके, एप्लीकेशन easier. How it does, let us see. Let us, for example, we take any three numbers. किसी भी थ्री नंबर्स को आप ले लो. सपोज 25 इंटू 35 इंटू 4. आपको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस, देन अगेन विल दिस. व्हाट यू विल डू, क्या करते हैं, 25 इंटू 35 कैसे करते हैं इसको, इसलिए क्या आएगा, 875 आएगा इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3500. ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें, इफ़ वी रियली वांट टू सिंप्लीफाई, ये तो मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखा दिया, लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग, दिस टू आर बिग नंबर्स, राइट. इसको मल्टीप्लाई करने में इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, राइट. तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा ए इंटू बी इंटू सी, अगर हम इसका पोजीशन भी चेंज करते इट डजेंट मैटर, द रिजल्ट विल बी सेम. अगर हम इसे लिखते ए इंटू सी इंटू बी, तो क्या इसका रिजल्ट चेंज होगा, नहीं होगा ना. तो हम यही यहाँ पे करते हैं, हम क्या करते हैं, 25 इंटू 4 हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इंटू 35 कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमने हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया हमने. यू कैन सी दिस. तो यहाँ पे क्या होता है, 25 इंटू 4 इट इज़ ईजियर टू कैलकुलेट. 100 इंटू 35, क्या मिला हमें, सेम रिजल्ट मिला या नहीं. दैट मीन्स विच वन इज़ ईजियर टू सॉल्व, डेफिनेटली दिस वन. सो यही काम होता है इन प्रॉपर्टीज़ का, हमें ये ज़रा सा दिमाग इस्तेमाल करना है और उसे अप्लाई करना है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है. ये मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट इट मेक्स योर वर्क ईजियर. तो हमें हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी होता है ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ. Let us take a negative number minus 25 into 98. You need to solve this. So it will be a tiresome job and a time consuming job. So you can do one thing. You can use the property here like minus 25 into, can we write 98 as 100 minus 2? Can we write it like this? We can, right? So minus 25 into 100 is minus 2500. Again, got it? And minus 25 into minus 2. And what was the rule? Just recall the rule that minus here into minus, minus minus it will become plus, and 25 into 2 is 50. Then what will be the result? It is minus 2450. So this was quite easier to solve rather than solving this two, or rather than multiplying these two numbers. So it is up to you how you can use this. Okay. So these are the properties which really makes our work easier. Okay. And one more, the last topic here, it is division of integers. Division of integers we have. See, whenever we take any multiplication, whenever we multiply any two numbers, what we get? 5 into 10 we get, 5 into 2 we get 10, right? So can we write this as 5 equal to 10 by 2, or can we write it like 10 by 2 equal to 10 by 5? लिख सकते हैं ना.
10 by 5 means what? This is equals to 10 divided by 2 and this is equals to 10 divided by 5. लिख सकते हैं ना ऐसे. So यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं. ठीक है. अब हम इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज -2 डिवाइडेड बाई -1, नेगेटिव नंबर्स लिया हमने. ठीक है. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? -2 डिवाइडेड बाई -1. ये क्या होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था कि वो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल था, वहाँ अगर माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल आउट होके हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा. ठीक है. और अगर दैट मीन्स फॉर एनी number, if we have any integer a, if it is divided by any negative integer b, then that is equal to what? -a divided by b. ये कैसे होता है कि अगर हम इसे भी एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं. जैसे कि हम 4 लेते हैं डिवाइडेड बाई -2 ले लिया हमने. क्या हो गया? 4 बाई -2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? -2. क्योंकि ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा और ये जो साइन है नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. तो ये वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे ये भी अप्लाई हो जाता है. ठीक है. और अगर हम इसे भी चेक कर ले, जैसे कि हमारे पास यहाँ -4 है डिवाइडेड बाई ये बी पॉजिटिव अगर है, तो क्या होता है यहाँ पे रिजल्ट? इट विल बी -2 अगेन. सो दिस इज सेटिस्फाइड. ओके. एंड इन दिस केस ये जो डिनोमिनेटर है b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. b 0 के इक्वल नहीं होगा. ओके. एंड प्रॉपर्टीज इसकी देखें हम. फर्स्ट वन इज इफ वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय 1. अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं, इंटीजर में भी -1, अगर हम इसे 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वो सेम इंटीजर मिलता है. इफ इट इज डिवाइडेड बाई 1 वी गेट द सेम. इफ वी डिवाइड 2 by 1 we will get 2 only. If we divide 3 by 1 we will get 3. If we divide -4 by 1 we will get -4. So that this is the first property for any integer a. If it is divided by 1 we will get the result a. The second is if the denominator is divided by -1, then we get the result is the same integer and the minus sign it joins, it comes in front of the result, end result. अगर ये -1 से डिवाइड करते हैं तो ये -1 यहाँ पे ये साइन आ जाएगा इधर. ठीक है. एंड थर्ड वन इज इफ a is any integer, if it is divided by 0. अगर इसे 0 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. ओके. ये डिफाइंड नहीं है. इसे हम इस तरह से भी दिखाते हैं. इसे इन्फिनिटी भी बोला जाता है. ओके. लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को, अगर सपोज ए एनी इंटीजर ए इंटीजर मैं एग्जांपल दिखाई दे रही हूँ, जैसे कि हम 4 बाई अगर 0 करते हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? नॉट डिफाइंड. दैट इज infinity. Okay. So finally we have completed the chapter integers. In the next video we will solve the exercise questions.